Hi, my name is Nazia Hussain. Hi, this is Love Israni. Love as a photographer is fantastic. I treat him like a buddy because that way, for me, it's very important to be connected to whether it be my photographer or my director. I think the last photo shoot I had done was probably 8 months ago. My look has changed. I've grown up. Your features change. So it's definitely going to be a lot different from any other shoot that I have done. And this is specifically capturing me with a new personality. Giving me an edge more than anything. He is capturing the girl next door, and he is capturing the liveliness and the playfulness in me. He clicks all my funny pictures also, but he gives my personality a certain edge. बहुत प्रेपरेशन किया था, 2-3 हफ्ते से हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे, कॉस्ट्यूम, स्टाइल, डिज़ाइन, और रात को अपना दिमाग बिल्कुल ब्लैंक करके सुबह में उठ के इधर आ गए. I think love I have actually on a conversation on the phone to my friend says that I've never chased a man as much as I've chased my photographer. So yeah, but our chemistry is very good, which is why we're having so much fun in this shoot, and it's really there's a lot of fun, and then again there's a lot of he's managed to click a couple of pictures that are so artistic and beautiful, and I'm just looking at them and I'm like, oh my god, it's beautiful. He's like, yes, of course, what do you think I'm going to take rubbish pictures of you? So yes, but it's been very exciting. I'm so glad and I'm so happy that we can do this. He's fantastic. He's really brought out an extra portion out of me, which I have been praying that please God let him be good. But he has, and I'd also like to thank all of you all for coming here and covering this. It's a special moment for me today and for Love and Show. मेरी पिक्चर का नाम है टॉम डिक एंड हैरी पार्ट 2. एक सीक्वल है डायरेक्टेड बाय दीपक तिजोरी. इट्स अ कॉमेडी. नहीं जी नहीं, ये मेरी फर्स्ट मूवी नहीं होगी. 2012 में मैंने पिक्चर किया था, उससे पहले, और साउथ में मैंने आशिकी 2 का तेलुगु वर्जन किया था, जिसमें मैंने लीड प्ले किया था. ये फिल्म एक्चुअली टॉम डिक एंड हैरी मैंने 1 साल पहले शूट साइन की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन डेट इशूज़ एंड ऑल दैट पुश हो गई एंड आई गॉट. आई थिंक कॉमेडी के लिए आई कांट रिहर्स नहीं कर पाते बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, और हर शॉट को आपको आई थिंक अगर मैकेनिकल हो जाए, आई डोंट थिंक इट विल कम आउट इन द करेक्ट वे. आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट द राइट वे, बट देयर इज नो प्रेपरेशन जो मैं स्पेसिफिकली कर रही हूँ. It's more impromptu of how scenes go and how dialogues go. All the outfits that have been chosen are for a specific shot, for a specific, to give it a certain enamor, a certain character. So each is special in its own way. When I was very young, और जब मैं छोटी थी मैं बोलती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी, तब मैं बॉम्बे टू गोवा बहुत देखती थी. तो लिटरली मेरे वो वीडियो कैसेट्स होते थे, मेरे डैडी वीडियो डालते थे और आई यूज्ड टू सिट एंड वॉच इट एवरी डे, लिटरली एवरी डे. एंड आई हैव ऑलवेज हैड द बिगेस्ट क्रश एंड एडमिरेशन फॉर